Hello everyone. Good evening, Pratmesh. All right. Good evening, everyone. Let's start today's session. Let me share the screen. All right. Hi. Good evening, Anjali. Good evening, Manas. Great. So कल ही हमारा लेक्चर था, राइट? सो कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? लेट मी जस्ट क्विकली हैव अ लुक बैक. ऑलराइट, हम लोगों ने पीओएसी कवर कर लिया था, राइट? एंड आई थिंक लास्ट में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए थे पीओएसी पर बेस्ड कंबाइनिंग मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, ठीक, ग्रेट. ऑलराइट. या आदित्य, यस. ओके. सो जैसा मैंने आप लोगों को बोला था, हम लोग आज का डिस्कशन हमारा स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स का. नाउ this is something which is one of the fundamental concepts, you can say. इनको यूज करके स्टोइशियोमेट्री के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने रहेंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बट उसके पहले we'll try to build these fundamental concepts first. We'll try to understand the terms, the definitions, and then work on their application. Now, before we get into the terms one by one, let me just a quick idea. Ha, right. Molarity, molality, right? These are the concentration terms that we are going to talk about. Now, Aditya, you are asking for the recordings of the chemistry lectures. ये already मैंने भेज दिया है. And if you want, then YouTube पर मैंने एक playlist बना के रखी हुई है, उसमें आप जाओ और वो lectures को access कर लो. ठीक है? There is a playlist. मेरे नाम से ही है. ठीक है, मिल जाएगा तुमको. Now, so नहीं रुद्र, कॉन्सेप्ट वाइज हो गया है स्टोइशियोमेट्री का. मैं क्वेश्चंस कराऊंगा बस, तो मैं कंसंट्रेशन टर्म्स यूज करते हुए वो क्वेश्चंस कराऊंगा. ऑल राइट. सो ध्यान से समझना यहाँ पर, ठीक है? व्हेन यू हैव अ solution in front of you, ठीक है? It is made by dissolving solute in solvent, ठीक है? There can be many solute, ठीक है? For example, let's say you have water as a solvent, तो आप उसमें ग्लूकोज भी डाल सकते हो, सॉल्ट भी डाल सकते हो, एंड मिक्स कर सकते हो. So you can have many solute, one solvent, or you can have single solute, single solvent, ठीक है? Now solutions में भी there are various types.
यहाँ पर as part of our discussion in this chapter we will be primarily dealing or discussing liquid solutions. ठीक है, when I say liquid solutions the phase of the solvent will be liquid primarily. ठीक है, so I'll be discussing liquid solutions. The solute, ठीक है, solute can be solid, liquid as well as gas. जैसे फॉर एग्जांपल आपने ग्लूकोज डाल दिया पानी के अंदर तो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोल्यूट इनसाइड अ लिक्विड सॉल्वेंट, या फिर आपने इथेनॉल मिला दिया, ठीक है, एक स्मॉल 30 ml बनाया तो दैट इज ऑल्सो सोल्यूशन. आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में डिसॉल्व कर दी, राइट, so that is also an example of a liquid solution and the gas in a liquid solvent. So primarily हम लोग liquid solutions के साथ में डील करेंगे and यहाँ पर before we begin एक important disclaimer रहेगा that concentration terms are valid for dissolved solute only. ठीक है, ऐसा नहीं कि पत्थर डाल दिया पानी में, ठीक है, if you do that then you will be ending up with a solute that is not dissolved. So that is not something that we are going to be discussing. ठीक है, Arpit is asking how is glucose solid? मतलब पाउडर है बट है तो फेज उसका सॉलिड ही, आप उसको लिक्विड या गैस थोड़ा ना बोलोगे. Now, having given this background, given this context, let us start with the concentration terms. Let me start with the first concentration term called as molarity. ठीक है, now what does molarity mean? So molarity of a solute in a solution is defined as moles of solute upon volume of solution in liters. ठीक है, यूनिट्स का खास ध्यान रखना है यहाँ पर. ठीक है, यूनिट ऑफ molarity is mole per liter or also called as molar, represented by a capital M. ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना that only for molarity this is going to be used. Molarity is represented using square brackets, right? So for example, if I ask you something like this, ठीक है, so it would mean that I am asking you molarity of glucose. ठीक है, so the square brackets are an indicator of molarity. ठीक है, so ये इसका definition है, pretty simple, straightforward. ठीक है, इसमें जरूर मैं एक additional piece of information आपको बता देता हूँ that sometimes we like to work with the different units also. So अगर मान लो solution का volume, ठीक है, आप ml में लिखना चाह रहे हो तो ऊपर फिर millimoles of solute यूज करना. ठीक है, what do you mean by millimoles? Right, 10 की power minus 3 is what milli signifies, right? हाँ, so I think this is something which is pretty straightforward. Many times आप लोगों ने देखा है and अभी questions अपन solve करेंगे तो आपके सामने आएगा. तो ऊपर अगर न्यूमरेटर में millimoles यूज कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में you can use volume in ml, and अगर न्यूमरेटर में moles यूज कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में the volume should be in liters only. ठीक है, so this is the formula.
नाउ लेट्स अप्लाई इट इन कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड धीरे धीरे मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाता जाऊंगा. So let me start with the simplest of questions, right? 1 mole of glucose, ठीक है, is dissolved in 10 liters solution. Determine ठीक है, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया. डिटरमाइन square brackets में C6H12O6. So what it means is that I am asking for the molarity, right? So yeah, I'm pretty sure that you are very eager to give the answer, but it is pretty straightforward. So let's just move past it. ठीक है, so ये molarity of glucose आ गया. ठीक है, अब धीरे धीरे थोड़ा सा ट्रिक्स बढ़ाना शुरू करते हैं. ठीक है, so let's say I am giving you a question that 117 grams of NaCl and 95 grams of MgCl2, ठीक है, are dissolved in 10 liters of water. Determine square bracket Cl minus. So I'm asking you to determine the molarity of Cl minus ions. बताओ जरा. हाँ, जलज सही है, रुद्र सही है. नहीं सुमित, कुछ गड़बड़ कर दिया आपने. देखो यहां से क्या होगा, moles of NaCl will be equal to 117 upon 58.5, which is the molecular weight of it, that is 2. So this implies moles of Cl minus is 2. ठीक है, moles of MgCl2 will be 95 by 95, that is 1. But what would this mean? This means that moles of Cl minus will be 1 into 2. As you can see in the subscript, एक MgCl2 के अंदर 2 क्लोरीन है, right? So how do you get now? You get that the total moles of Cl minus is 4. So thus concentration of Cl minus will be 4 upon 10, that is the volume of the solution, that is 0.4 molar. ठीक है, so इसमें ये केयरलेस मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है. ठीक है, नोट करते जाओ, जो भी केयरलेस मिस्टेक्स कर रहे हो नोट करते जाओ. इट इज ओके टू मेक दोस केयरलेस मिस्टेक्स नाउ, बट देन लर्निंग भी आनी चाहिए उससे. ठीक है, all right, next question, slight variation. Determine the number of chloride ions present in 0.3 molar 100 ml AlCl3 solution. बताओ. वैष्णव आपने देखो, हाँ ठीक है, सही बताया है. नहीं प्रथमेश,
नहीं, रुद्र का सही है, जलज का सही है, नहीं रोनन आपका सही नहीं है, सानिध्य का सही है। अनु 0.09 इंटू Na कौन करेगा? Na नंबर ऑफ आयंस पूछा मैंने। हाँ, 0.09 Na इज द करेक्ट आंसर। राइट, सो यहाँ पर आपको मोलारिटी मिल गया। ठीक है, आपको AlCl3 का मोलारिटी मिल गया 0.1 और सॉरी 0.3 मोलर। तो इट विल बी मोल्स ऑफ AlCl3 upon volume of solution in liters, right? So 0.3 or volume of solution is in is 0.1, so you get moles of AlCl3. ठीक है, you will get the moles of AlCl3 be equal to 0.3 into 0.1, that is 0.03. Now from here, if I ask you what is the moles of Cl minus ions, so you will be 3 times this, so 0.09. But this was not what I had asked. I had asked number of chloride ions. So it will be 0.09 into Na. That is what the correct answer would be. ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, एंड आप देखोगे, मतलब मैं तो इस आई हैव अ सीडिस्ट नेचर, तो मैं ऐसा ऑप्शन डालूंगा 0.09 वाला, एंड देन जब आपके नेगेटिव मार्क्स आएंगे तो लाइक मुझे बहुत खुशी होती है, जैसे मेरे अंदर का सेडिज्म सेटिस्फाई होता है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन, प्रथमेश तुम्हें सेडिस्ट नहीं पता क्या होता है? अरे अरे अरे, तुम तो मेरे से भी कमजोर हो इंग्लिश में यार। कोई नहीं कोई नहीं, होता है होता है, थोड़ा गूगल करो। डिटरमाइन Cl minus ion in a solution prepared by mixing equal volume of 0.1 molar NaCl solution and 0.1 molar MgCl2 solution. चलो आंसर दो। राइट सानिध्या? नहीं, जरद सही है, अनु आपने केयरलेस मिस्टेक कर दिया, रोनन केदार राइट। मानस क्या कर रहे हो? हाँ ऋग्वेद, आपने भी गड़बड़ कर दी, पूर्णा आपने भी गड़बड़ कर दी, वैष्णव राइट, रुद्र राइट। सो इसमें क्या रहेगा देखना, आपने क्या केयरलेस मिस्टेक करा होगा, इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करना। ठीक है, यू आर एडिंग, ठीक है, 0.1 मोलर NaCl solution, कितना? से V liters, and you are adding 0.1 molar MgCl2 solution, say the same volume, that is V liter.
So after adding, the volume becomes 2V liters. So this is the catch. ठीक है, upon mixing, ये सुन के आपके कान खड़े हो जाने चाहिए that you have to think about what is the final volume. ठीक है. Now, in order to get the final concentration, we need final volume and final moles. So moles के ऊपर figure out करते हैं. Moles of Cl minus from NaCl, right? That is something which is going to be 0.1 into V. ठीक है. And moles of Cl minus from MgCl2 will be equal to 0.1 V into 2, right? I hope ये 2 आपको समझ में आ गया होगा because of the fact that there is MgCl2. ठीक है. Now what you get is that total moles of Cl minus is 0.3 V and total volume of solution is now 2V. So thus you get the concentration of Cl minus ions as 0.15 molar. ठीक है. Let me zoom out. You see and understand and realize the careless mistake that you made. ठीक है. V नहीं आएगा, V cancel out हो जाएगा प्रथमेश. ठीक है. So this is हाँ, right. So एक बार दोबारा देखना अर्पित. The thing is that आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि फाइनल सोल्यूशन जो है उसके अंदर Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालो which is prepared by mixing these two solution. So you said all right. If I have to get the Cl minus का concentration, ठीक है, तो this is the final solution में, so it has to be final moles that are there upon the final volume in liters, right? So that is what we are trying to figure out. Now the moles, they are going to come from individual NaCl and MgCl2 solutions, and volume is the addition of the volume that we added from both the solutions. So combining that, you got the answer of the concentration of Cl minus. ठीक है. अभी और क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसके. ठीक है, you will get the answer. नहीं पूर्णा, आपने ये नहीं भेजा था आंसर. You sent something else. You sent 3/20. What does that mean? 3/20. Oh yeah. हाँ रे. You tricked me, Purna. I was looking at. I will be one of those grumpy teachers. You did not answer the way I wanted to. I will not correct you. No, I'm just joking. I just didn't realize that you sent it in a fraction. All right. So एक और question try करते हैं. ठीक है. Slightly more tricky than what we have done अभी तक, and it would require you to put in that train of thought and focus. ठीक है. तो ध्यान से observe करना. Determine Cl minus concentration in a solution obtained by mixing say couple of things. 100 ml of 0.2 molar NaCl solution, 150 ml of 0.1 molar MgCl2 solution. ठीक है. 10 into 10 की power -3, or I should in fact rather say 10 millimoles. ठीक है. 10 millimoles of FeCl3. ठीक है. ये सॉलिड पाउडर मिला दिया. इससे वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. जस्ट सॉलिड लाके डिसॉल्व कर दिया. 0.745 grams of KCl and say 750 ml of H2O. ठीक है. इन सब की मिक्सिंग करिए. Let me know what you get as the final concentration of Cl minus ion.
हाँ, रुद्र सानिध्य, राइट, आप दोनों के आंसर करेक्ट है। नहीं, केदार वैष्णव, कुछ गलती हुई है, देखो एक बार चेक करो। Right, some have given correct answer. The correct answer is 0.09. That is the correct answer. 0.09. All right, let's see. Ab, that is the thing. See, Cl minus concentration is total millimoles of Cl minus upon total volume of solution in ml. Okay, you could have proceeded in the uh, liters and moles ka terms as well, but yeah, this is one of the ways of also progressing. So the volume you have is 100, 150, right, and 750. These are the volume of the solution that are going to be mixed together. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सॉलिड्स डाल के वॉल्यूम पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता. लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू नोटिस घर पे व्हेन यू हैव लाइक वाटर, उसमें आप नमक डाल दोगे तो वॉल्यूम ऐसे ऊपर ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होता. इट इज समथिंग विच इज नेग्लिजिबल. So you can neglect the volume change that would happen if certain solids are added. So the volume or the denominator is sorted. It is 100, 150 and 750 ml, right? Now, let's come to the numerator part. Okay, let me be a little swift with the numerator part if it's okay with you. So you have 100, that is the volume, into molarity. So you get the millimoles of NaCl, and because in each NaCl there is one Cl only, so I just multiplied by 1. Similarly, for MgCl2, it will be 150 into 0.1 into, now because MgCl2 each molecule has 2 chloride, I'll multiply by 2 here. Okay. Then you have 10 millimoles of FeCl3. So 10 into 3, because all I'm counting in the numerator are the millimoles only.
ठीक है, एंड FeCl3 के 10 मिलीमोल्स हैं, तो क्लोरीन कितना होगा, थ्राइस ऑफ दैट, राइट. What about KCl? So KCl is 0.745 upon 74.5, this many moles, but because millimoles are being counted, so I'll multiply it by 10 raised to the power of 3 and again by 1 to get the Cl ions. ठीक है, I will let the water part be in the denominator only because water is not contributing anything to the numerator. No Cl minus are coming from adding water. So this is what I am getting. Now if I simplify this, this is 20, this is 30 plus 30 plus looks like 10 upon 1000. So this looks like 90 by 1000, which is 0.09 molar. Now, is this something which you are comfortable with? How we did the calculations? All right. मास दिया है ना, तो मास को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके तो मोल्स आएंगे ना. मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज मोल्स, एंड मोल्स को मिली मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करा है. ये आप मुझसे जरूर पूछ सकते थे. आई वुड हैव टोल्ड यू दैट दिस इज टू कन्वर्ट टू मिली मोल्स. ठीक है, ऑल राइट. नाउ I think concentration का enough practice हो गया है. Now we seem to understand the concept of molar concentration in a good detail. अब आपके सामने अगर मान लो कोई क्वेश्चन भी आएगा which is a stoichiometry question and uses the concept of molarity, so you would be in a good position to answer it. So for example, if I ask you that determine the volume of 0.1 molar NaOH solution required to completely neutralize 100 ml of 0.2 molar H2SO4 solution, what will be your answer? सी अर्पित नहीं, प्रथमेश आपका आंसर सही नहीं है, दोबारा चेक करो. अर्पित, concentration means a general term. ठीक है, there will be many ways of describing how much of solute is present inside a solvent, and as a collective term, as a collective word, we use concentration terms. Now within that I am teaching you the first term, that is called as molar concentration or molarity. ठीक है. हाँ, 400 ml is the correct answer. 400 ml कैसे आया आप देखो ना, यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है.
First thing, write the equation, balanced equation. So you have the balanced neutralization equation in front of you. Please don't tell me that you did not know how to write the balanced equation. Like that will be unacceptable. Acid plus base giving salt plus water, ये आपको आना चाहिए. ठीक है? Now within this equation अब आप observe करना, the analysis part is also pretty straightforward. So what you need to do is moles upon coefficient should be equal to moles upon coefficient. ठीक है? NaOH के moles and H2SO4 के moles. ठीक है? complete neutralization के लिए. So moles क्या होंगे? molarity into volume. So 0.1 molar into V upon 2 is equal to 0.2 into 100 divided by the coefficient 1. And from here, you'll get the value of volume to be equal to 400 ml. ठीक है? Or you could have chosen to convert it in liters also. That's also fine. दोनों जगह मिलीलीटर्स ले लिया तो भी चलेगा, दोनों जगह लीटर्स ले लोगे तो भी चलेगा. It's okay. ठीक है? All right. So इसी तरीके से और भी आपके सामने questions आएंगे where you will have to use this technique of molarity. ठीक है? मोल analysis करो in the same manner how you used to. It's just that additional information कई बार ऐसे mass में provide होती थी पहले, let's say mass में, volume में, अभी molarity में provide हो रही है. So it's okay. You can still work with that. ठीक है? All right. Now let's move on to the next concentration term. Let me introduce molality. Now molality का definition observe करना. Molality of a solute is defined as moles of solute upon mass of solvent in kg. Moles of solute upon mass of solvent in kg. Now इसमें भी units का ध्यान रखना. I'll reiterate. Unit of molality will be mole per kg, or also called as molal, MOLAL, represented by a small m. ठीक है? Now you may also wonder that why this new concentration term defined. So one of the important aspects to note about this concentration term is that this concentration term is temperature independent. ठीक है? This is something which you should be able to understand. Yeah, small m, Sumit. And this concentration term is temperature independent. So इसमें क्या होगा, that molarity में कैसा था? Molarity में volume का term था, that volume is something which is sensitive to temperature. So if temperature changes during the measurement of that concentration term, then you might encounter some error. But molality is something which will become temperature agnostic, so you will not be able to face any problems. And this is something which is especially useful when we are doing temperature sensitive experiments. ठीक है? आएगा future में, there will be certain particular formulas of elevation and boiling point and depression and freezing point that we will be discussing later, जहाँ पर I'll ask you to revisit molality as a concentration term.
ठीक है, अभी के लिए इतना डेफिनेशन काफी है. रेस्ट ऑफ द लर्निंग let's try to get that from solving examples. So let's take this situation that you have 90 grams of urea, ठीक है, NH2CO NH2 is dissolved in a solvent to make 250 grams of solution, ठीक है. Determine its molality. शुरू हो जाओ. No, there are no brackets. Molality is just small m. अमोनिया कहाँ से आ गया वैष्णव? Like why do you need ammonia? तो निकाल लो ना. अभी क्या मतलब चम्मच लाके स्पून फीडिंग शुरू कर दूं तुम्हें? फॉर्मूला लिख दिया सामने, मोलर मास भी नहीं निकालना है. बड़े नवाब हो यार तुम. हाँ सुमित आपका आंसर सही है, बट उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है. मतलब लाइक यू फॉरगॉट द यूनिट दैट इट इज केजी. काफी बच्चों ने गलत आंसर दिया है इसका. सो लेट मी गेट यू द करेक्ट आंसर. यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना. सो मोलालिटी is what is given to you as moles upon, notice करना, mass of solvent, ठीक है, not the mass of solution. So many students have committed that careless mistake right here. तो यहाँ पर आप ध्यान रखना फ्यूचर के लिए. Not solution, this is the mass of solvent. Okay, now since mass of solution is mass of solute plus mass of solvent, so you will get that 250 is equal to 90 plus mass of solvent, and based on that you will then be able to get the answer. So अब यहाँ पे आ जाएगा आपका mass of solvent is 0.16 kg, ठीक है, 0.16 kg है, ठीक है. 160 ग्राम्स रहेगा, उसको kg में कन्वर्ट करना मत भूलना. Now you can use molality. Molality will be equal to moles. Moles कितने हो जाएंगे? 90/60, ठीक है. 60 is the molecular weight. So you will get this to be 3 upon 0.32 or roughly 9.37 something. कितना हो जाएगा ये? Let me
Do a quick calculation. 3 divided by 0.32 will be 9.375 मोलर. ठीक है, तो अब जिस जिसका आंसर मैच नहीं करा था, ठीक है, आप लोग नोटिस करो, आइडेंटिफाई करो कि आपने गड़बड़ कहाँ करी, वेयर इज इट दैट यू मेड द मिस्टेक, एंड इंश्योर दैट यू डोंट मेक दिस मिस्टेक इन फ्यूचर. हाँ हाँ चलेगा, फ्रैक्शन में भी चलेगा, इट्स ओके. अभी तो हम लोग कॉन्सेप्ट ही सीख रहे हैं ना. ऑल राइट, नाउ let's understand the interconversion between molarity and molality. So this is going to be also important to you, for you to understand that you are able to differentiate clearly between molarity and molarity, molarity and molality, and understand the interconversion between them. So when you solve questions, when you come across interconversions, sometimes students tend to learn some formulas. ठीक है, बुकलेट में, बुक्स में दिए हुए हैं कुछ formulas, तो उसमें मेरा आपको strict advice रहेगा, strict guidance रहेगा that please do not fall for those. ठीक है, do not get into uh, you know get the rectification of the formula and try to then give the answer. ठीक है, यहाँ पर आप अप्रोच सीखना, दैट शुड बी योर मेन ऑब्जेक्टिव of solving these interconversion questions. So I'll teach you the methodology via example only. Learn the approach. So take an example. Let's take a simple one. Determine the molality of 0.1 molar urea solution of density 1.1 gram per ml. So आपको मोलारिटी दे दी है और मोलालिटी पूछा जा रहा है. ठीक है, this is what you are supposed to now work with. You have been given the molarity, molarity. You have to now determine the molality. Now अब यहाँ पर प्रोसीड करना एक इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग स्टेप्स है. ठीक है, you can start by saying that let the volume of solution be V liters. ठीक है, sometimes you might also want to use not use a variable. ठीक है, you can also say 1 liter and do the solving. That also works. क्योंकि आप देखोगे तो क्वेश्चन में there is no hard data regarding volume. ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि something is 100 ml, something is 200 ml, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है. ठीक है,
राइट, सो अब आपको क्या करना रहेगा, यही अपना स्टार्टिंग स्टेप लेकर आगे बढ़ना रहेगा, एंड यू विल हैव टू डू अ बैक एंड फोर्थ बिटवीन द क्वेश्चन, ठीक है। नाउ अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना एज अ नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। व्हाट आई विल एडवाइज यू इज फोकस ऑन द न्यूमरेटर and denominator separately. स्पेलिंग सही है क्या, TLY separately, हाँ सही होगी। So focus on the numerator and denominator separately of the concentration term asked. So what is the concentration term asked from you? Molality. Molality का न्यूमरेटर रहेगा moles of solute, ठीक है, and denominator रहेगा mass of solvent in kg. So let me figure out how to work with each of them, ठीक है। So let me figure out the numerator bit अलग से and denominator bit अलग से, ठीक है। Now look at the data that has been given to you. We have taken volume of solution equal to be V liters, and molarity of urea has to be given or has been given to you as 0.1 molar. So what does this mean? This means that moles of urea will be 0.1 into V. Okay, so at least we figured out the numerator. Okay, we did not get a value of it, but we got the value in terms of V. That's okay. हो सकता है V cancel out हो जाए end में, ठीक है, वो हमें बाद में पता पड़ेगा, but at least जितना I am able to connect the dots, let me use that and proceed. ठीक है, अरे ये क्या हैंग हो गया है क्या इरेजर, आइला। गिव मी 1 सेकंड गाइस, आई थिंक मेरा वन नोट अटक गया है। राइट, सो एज आई वाज सेइंग, न्यूमरेटर फिगर आउट हो गया। अब डिनोमिनेटर के लिए सोचो, डिनोमिनेटर था मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है, एक तो हमारा स्टार्टिंग स्टेप है दैट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज V liters, राइट, एंड डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर ml। सो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इससे मुझे मिल जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन विल बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बोथ द थिंग्स आर ऑफ सोल्यूशन। सो आई विल गेट 1100 ग्राम, ठीक है, V एक्चुअली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा into V grams, ठीक है। Why? Because the density was in gram per ml and the volume was in liters. So I did the appropriate conversion and got the mass of solution. But this is not what the denominator is. The denominator is mass of solvent, right? Mass of solvent will be equal to mass of solution minus mass of solute. Now, what do we have as a suggestion? The mass of solution is something that we figured out. It is 1100 V. But what about the mass of solvent? This is where the moles come in handy, ठीक है। ये मुझे कैसे स्ट्राइक होगा, दिस इज समथिंग विच स्ट्राइक्स मी ऑन द वे, ठीक है, व्हेन आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन आई एम जस्ट राइटिंग डाउन एज मच एज आई कैन, ठीक है, एंड तब मुझे नेक्स्ट स्टेप स्ट्राइक हो जाएगा। सो 0.1 V इंटू 60 मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो यू विल गेट दिस टू बी अराउंड 1094 V, ठीक है, ये आ गया आपका 1094 V। So thus now you determine the molality. Molality comes out to be the moles 0.1 V,
अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट विच इज 1.094 वी kg। ठीक है, ये ग्राम्स में था तो ये kg में आ जाएगा if I divide by 1000. So I'll get my answer as 0.1 upon 1.094 small m. V cancels out. ठीक है, now this is something which is pretty close to 1 by 11 only. So you may have sometimes that approximation in your mind. ठीक है, ऑल राइट। सो इसमें किसी को जी इसको टाइम लगेगा। ठीक है, ये जिन जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट टाइम ये एप्लीकेशन देखा है, सीखा है, समझा है, this is something which will take time for you to be good at. ठीक है, it is not something pretty easy. ये एक अप्रोच है जो आपको धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा। I'll make you practice more questions on it, but it will be only through practice that you will become better at it. जब तक आप खुद से ऐसे 5-6 क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर लेते हो तब तक you will not get that confidence. ठीक है, all right, now let's discuss. Let me actually take one more concentration term. ठीक है, and then maybe you can answer a question, or in fact let me see if I can find that question. Just give me 1 minute. कहाँ गया? ठीक है, I will actually need to teach you one more concentration term before I can give that question. ठीक है, so एक और concentration term पढ़ लेते हैं, then I can give you that question. So the concentration term will be mole fraction. ठीक है, mole fraction is represented by small x. Now what does it mean? The definition is pretty simple, as the literal meaning of fraction is. So mole fraction of a component in a mixture is equal to moles of the component upon total moles of all components in mixture. That is what is meant by mole fraction, right? So for example,
if you have a sample of say humid air, ठीक है, and इसके अंदर O2 भी present है, N2 भी present है and water vapor भी present है, ठीक है, then and these are the moles, ठीक है. So if I ask you the mole fraction of say O2, so what will be your answer? Your answer will be moles of O2, ठीक है, upon the total moles, which will be moles of O2 plus moles of N2 plus moles of H2O, ठीक है. Say I gave you the data of mass of O2 is present, mass of N2 and mass of H2O, ठीक है. I gave you the data of mass, right, in a sample of humid air, ठीक है, and I asked you mole fraction of O2 क्या होगा, so what will be your answer? Your answer again has to be moles of O2 upon the total moles. So I hope this is abundantly clear with everyone that mass upon molecular weight gives you the moles. Is this clear? Now, let's say if you were to apply this in one of the questions, let me get a question for you. देन उसके बाद मैं इसको सॉल्यूशंस में भी अप्लाई करना सिखाऊंगा. अभी मैं एक जनरल क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ एंड लेट्स सी उसमें आप कैसा एक बार इसको अप्लाई कर पाते हो. गिव मी 1 minute, I'll just find out the question. All right, अच्छा क्वेश्चन है. इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, सो डोंट टेक इट लाइटली. टेक योर टाइम. Multiple concepts have been clubbed together and then try to solve. All right, बताओ. %40 by moles mean 40% by moles. मतलब how literal, how more literal do you want it to be? Moles of ammonia upon the total moles should be equal to 40%.
मैं कुछ बोल ही रहा हूँ शुभम, सॉल्व करो ना। ऑलराइट, देखो यहाँ पर कैसा रहेगा, N2 एंड H2। ठीक है, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने आंसर भी दिए हैं, हो सकता है कि यू माइट बी करेक्ट, मेरे को चेक करना पड़ेगा। रोना, निशा, मानस, मैंने एक्चुअली देखा नहीं है क्या आंसर है, बट मोस्ट लाइकली इट इज आई थिंक ऑप्शन ए। ठीक है, लेट मी चेक। सो यू हैव N2 and H2 and they are going to combine to form ammonia. ठीक है, now they are in 14:3 by mass ratio। ठीक है, एंड बाकी सब फ्रैक्शंस एंड ऑल ही पूछे हैं आप लोगों से। सो यू कैन टेक देयर मास टू बी आइदर, वेरिएबल के टर्म्स में ले लो 14x एंड 3x, या तो ऐसे ले लो, और थोड़ा सा टेक अ चिल पिल, क्योंकि डेटा नहीं है, देयर इज नो हार्ड डेटा, नो हार्ड डेटा ऑफ मास। तो जरूरी नहीं है कि अब मैं वेरिएबल में ही करूं। ठीक है, आई कैन बी लिटिल रिलैक्स्ड सेइंग इसको 28 ग्राम्स मान लेते हैं एंड इसको 6 ग्राम्स मान लेते हैं। तो मोल्स कितने हो जाएंगे इसके, 1, और इसके हो जाएंगे 3। ठीक है, नाउ दिस विल बी योर स्टार्ट। ठीक है, एंड डेफिनेटली द रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू बी 100% कंप्लीट। ठीक है, लिखा हुआ है वहां पर दैट आफ्टर सर्टेन टाइम ammonia was found to be 40% by moles। ठीक है, had the reaction gone to 100% completion, then it would have been all 100% ammonia only। ठीक है, so what it is saying is that there is some in between situation। ठीक है, it is not end। so what is happening here, let's say if x moles got reacted, then 3x moles of hydrogen will get reacted and 2x moles of NH3 will get produced। ठीक है, this is what I did using coefficients। ठीक है, so what will be the value of moles of N2, it will be 1 minus x, H2 will be 3 minus 3x and ammonia will be 2x। ठीक है, so now इस situation में how to solve for x, the data is given to you that in this situation you have 40% moles of ammonia। so we'll use the data to solve for x, use 40% ammonia by moles to solve for x। so it will be moles of ammonia upon total moles, that will be 40 by 100। so it will be, you can quickly solve for it, this will be x upon 1 minus x plus 3 minus 3x plus 2x is equal to 40 by 100। so go ahead and solve for this, and you will get the value of this will be 2 by 5, so 5x will be equal to
यहाँ पे हो जाएगा 8 minus 4x, so x is equal to 8 upon 9. ठीक है, now x is equal to 8 upon 9, so mole fraction of N2, ठीक है, so mole fraction of N2 will be, sorry, x से represent करेंगे, mole fraction of N2 will be moles of N2 upon the total moles, so it will be 1 minus 8 by 9, that is 1 by 9 upon total moles कितने आए इसके, हाँ अमोनिया इज 2x ना, वही तो लिखा है मैंने, 1 minus x plus 3 minus 3x plus 2x, so 4 minus 2x हो गया ना टोटल मोल्स. कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई क्या? ओ राइट राइट राइट, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, तो ये एक्चुअली 2 और 2 कट जाएगा, और आई शुड से 10x, हाँ, so you will get x is equal to actually 5 plus 7, 7 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 by 7x, oh sorry 4 by 7, right, so this will be 3 by 7 moles of N2, and the total moles will be, as I said, 4 minus 2x, so 4 minus 6 by 7, so 3 by 7 upon 22 by 7, so 3 by 22, which is close to your option A. नहीं नहीं रुद्र, वैसे नहीं कर सकते, हाँ अर्पित कहाँ पे डाउट है आपका? हाँ वो मैंने एडिट करा ना, मैंने यहाँ पे वो गलती से x लिख दिया था, अभी मैंने सही लिखा, मोल्स ऑफ अमोनिया इज 2x, तो मैंने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी क्या? What is it that I made a mistake out of? X is 4 by 7, so moles of ammonia, mole fraction of ammonia, moles of N2 is 1 minus x, so that is 3 by 7, the total moles is 4 minus 2x, so 4 minus, हाय क्या कर रहा हूँ मैं, what nonsense mistakes, 20 by 7, 3 by 20, yes 0.15 exact, ठीक है, माय बैड गाइस, थोड़ा ज़्यादा ही केयरलेस मिस्टेक कर दिया इसमें. हाँ क्या डाउट है अर्पित तुम्हें, कहाँ पे अटक गए? ये एनालिसिस में बताओ कहाँ पे अटके, इनके कोफिशिएंट्स देखो ना, अगर इसका x मोल्स जाएगा तो इसका 3x मोल्स जाएगा और इसका 2x मोल्स बन जाएगा, वही लिखा है मैंने यहाँ पर. क्या दिक्कत है? अभी क्लियर है? All right, so maybe now you get a idea of what the mole fraction is. अच्छा तुम कुछ कहना चाह रहे हो, रुको, let me unmute you. हाँ बोलो. सर हाँ सर मेरे को ये मतलब टोटल मोल्स, व्हाई डिड यू एडेड ऑल दैट थ्री? आई डिडंट अंडरस्टूड दैट. because that is the what that is the meaning of total ना, total is all the moles. सर बट टोटल मोल्स फॉर इट विल बी सिम अमोनिया का होगा ना?
नहीं ना, आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज रीड करो ना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 40% बाय मोल इज अमोनिया। ठीक है, अमोनिया वॉज फाउंड टू बी 40% बाय मोल, मतलब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, 40% ammonia by moles, it means that moles of ammonia upon total moles is 40 by 100. ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ रुद्र, आप अपना हैंड रेज करो ना तो आप मुझे देखोगे। हाँ सॉरी, हाँ बोलो। Hello, sir. Can you hear me? हाँ Sir, I wanted to ask that what I did was first I took the ratio of moles that I got 1 by 3 for N to H ratio. हाँ, Then I added 1 because for total moles I got 1 by 4. Then the reaction नहीं नहीं was, नहीं, I didn't get that step. sir, first I took ratio of N to H that I got 1 by 3 according to moles. Right. Then I added 1 to the denominator for that ratio to get But the mole fraction ratio. no, but that was before the reaction na. Yes, sir. Then the reaction was 0, that was 40%. So I multiplied by 0.6. नहीं, ये तो मतलब I can't even fathom like how are you thinking on this lines. मतलब you have been given some data point, and that data point is about the mixture after some reaction has happened. So first what you should do is analyze that. ठीक है, you have to first think about that start में क्या हुआ, कितना react produce हुआ, and then in between what is it that we have as the composition of N2H2 and ammonia. And now for this mixture it is given that 40% is ammonia by moles. You can't apply that 40% data in the start, you can't apply it anywhere randomly. समझ में आया? हाँ, देख लो क्वेश्चन भी देख लो दोबारा। This is how we sort. It's a good question, it's not easy. हाँ, there can be multiple ways of working on this, Sumit. But what he meant, that is not something which I was able to comprehend. All right, now coming back to our discussion about liquid solution. ठीक है, so in a binary solution का मतलब क्या हो गया, सल्यूट एक है, मतलब एक ही सल्यूट है और एक ही सॉल्वेंट है। ठीक है, so in a binary solution we will define mole fraction of solute as moles of solute upon total moles. Total moles will be moles of solute plus moles of solvent, है ना? And similarly you can define mole fraction of solvent as well. Mole fraction of solvent will be moles of solvent upon the total moles, which will be moles of solute
plus moles of solvent. ठीक है, and it goes without saying that the sum of the mole fractions will be equal to 1, right? Mole fraction of solute plus mole fraction of solvent will be equal to 1. ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट करेंगे and it will be again an interconversion. So let's see, determine the mole fraction of urea. ठीक है, यूरिया ये मैं बार बार बता रहा हूँ NH2CO NH2 in its 1 molal aqueous solution. हाँ अलीना, हो सकता है ना, why can't it be the case if water is in lesser quantity, then it could be the case. हाँ जलज, आपका आंसर करेक्ट है. राइट वैष्णव. हाँ सानिध्य ऋग्वेद, राइट. सो यहाँ पर कैसा हो गया, ऑब्जर्व करना. अब there can be multiple ways in which you would want to proceed. So one of the ways that I will recommend is that same approach which we spoke about in the last class. ठीक है, will start with, ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हर बार वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 1 लीटर से स्टार्ट करो. यू कैन स्टार्ट विद डिनोमिनेटर of given concentration term as well. ठीक है, so you can, यहाँ पर given concentration term क्या है, molality. So you can say that mass of solvent equal to m kg. ठीक है, you can also take the value of 1 kg or you can let it be a variable also, I don't mind. ठीक है, दोनों से वर्क कर जाएगा. लेट मी टेक द वेरिएबल एंड शो यू. तो बाद में वैल्यू लेकर भी आप कर सकते हो, तो आसान हो जाएगा. ठीक है, नाउ अब आप ऑब्जर्व करना. ठीक है, सिंस मोलालिटी is given to you as 1 molal, so this implies moles of urea will be equal to 1 into m, है ना. तो मोल फ्रैक्शन का आपका न्यूमरेटर तो सॉल्ट हो गया, डिनोमिनेटर में क्या आएगा मोल फ्रैक्शन में, मोल्स ऑफ यूरिया एंड मोल्स ऑफ वाटर. ठीक है, सॉल्वेंट जो भी है. नाउ सिमिलरली मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, moles of water will be the mass of water which is 1000 m grams
divided by the molecular weight, that is 18. So thus mole fraction of urea you will get as m upon m plus 1000 m by 18. The m cancels out and you'll get the answer as 18 upon 1018. Or in fact, small m is the symbol of molarity na. So let it be something else. Let it be some p kg. Okay, let this be p kg. So this will be p and ये हो जाएगा p upon p plus 1000 p by 18. The p cancels out and this will be 18 by 1018 small m. Small m stands for molal. ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा. ठीक है, it wasn't much difficult. I think many of you would have been able to get this into conversion. ठीक है, the trick is to start with the denominator of the given concentration term. ठीक है, it will help your problem solving much more. ठीक है, तो इसी तरीके से और कन्वर्जन्स भी रहेंगे. अभी मैंने मोल फ्रैक्शन मोलारिटी का कन्वर्जन आपको नहीं बताया है. ठीक है, सो अगेन नो फॉर्मूला, अगेन विल बी जस्ट यूजिंग एन अप्रोच. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में यहीं से पिक करते हैं. विल टेक कपल ऑफ मोर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एंड देन विल बी डन विद द चैप्टर. ठीक है, सो उसके बाद में ऑल learning will be then from questions only. So I will be asking you to then take up a good chunk of your time in doing mole concept का booklet also. ठीक है, apart from the homework और भी आगे का questions you can take an attempt at. Now so that is sufficient for today's lecture. Any doubts you have? All right, great. Then let's okay, there's one doubt from Rugved. Which other book is good for mole concept for practicing? See, बहुत सारी बुक्स है ऋग्वेद. आप अगर एक बुक कोई पिक करना चाहते हो तो नरेंद्र अवस्थी पिक कर लो. इट विल बी गुड फॉर योर फ्यूचर चैप्टर्स एज वेल. ठीक है, देन मोलारिटी ऑफ वाटर, मोलालिटी नहीं नहीं नहीं. एंड वी वर नॉट, क्या भार्गव का क्या है? आई वॉज इन द 7th में बैच एंड वी हैव बीन गिवन नोट्स टिल एटॉमिक स्ट्रक्चर. सो व्हाट शुड वी डू नाउ? एज इन attend the lectures and ensure that nothing is left. That's what I can say, Bhargav. What do we do at today? हाँ तो तुम रुद्र कंपेयर करो ना, कुछ ऐड करने लायक है कि नहीं है. मैं भी सब सब तुम्हें क्या सब चाहिए क्या? मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज बताऊं मैं? हाँ रुद्र, कॉमन सेंस है, कुछ चीजें ऑब्वियस होती हैं. हाँ मानस, आप सेंगेज की बुक भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. इट्स ऑल्सो अ गुड बुक. All right. Yes. So now let's end the meeting. If there aren't any more doubts. All right. Chalo. Great. Thank you guys. Take care. We'll meet again on some day in this week itself.